to why we need this phase 2 reactions, or it is also known as conjugation reactions. Phase 1 reaction was functionalization reactions, that we are going to add some functional group, as I said, like oxidation, so addition of oxygen, okay, reduction is a loss of oxygen or addition of hydrogen, or OH group. So as I said, like if you want to make any lipophilic drug to like hydrophilic, so it has to contain either H plus or OH minus. So it has to be more water-like, so that it will get dissolved properly, it will get absorbed by kidney, and it will get eliminated through urine. Here, what is the need of phase 2 reaction? Like there are some drugs, even after getting converted by phase 1 reactions to hydrophilic, or sometimes it happens like by phase 1 reactions, it won't get converted to hydrophilic compound. एनी लाइपोफिलिक ड्रग अगर कोई भी हम लोग फेज 1 रिएक्शन उस पे लगाते हैं कोई भी कंपाउंड पे, सो इट वोंट गेट कन्वर्टेड टू हाइड्रोफिलिक ड्रग, कि वो एलिमिनेट नहीं हो पाता. तो इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज फेज 2 रिएक्शंस फॉर दैट रीजन, कि ऐसे वाले जो ड्रग्स हैं जो फेज 1 से नहीं हो पा रहे हैं, दैट विल गेट कन्वर्टेड टू हाइड्रोफिलिक ड्रग्स, एंड दैट विल कैन eliminated from the body. So these are some conjugation. So these are the conjugation, means some of the moiety, some of the group is getting combined or is getting conjugated with the original structure of the drug and making it more heavy, and then this heavy drug will not bind to any receptor, it won't show its activity, and it will get eliminated to urine. तो ये ऐसे वाले ग्रुप्स होंगे, दे आर मोर हाइड्रोफिलिक, सो दैट द कंपाउंड ऑटोमेटिकली गेटिंग हाइड्रोफिलिक. तो कौन से रिएक्शंस है इसमें? तो फर्स्ट इज ग्लूकोरोनिडेशन, which is glucuronic acid, glucuronidation reaction, then sulfate conjugation, okay, then conjugation with glycine, glutamine and other amino acids, glutathione or mercaptopuric acid conjugation, and acetylation and methylation. So we will see one by one. So first of all, जो मैंने अभी बोला कि most of the phase 2 reactions are considered to be truly detoxifying pathways. Truly detoxifying क्यों बोला है? Because जो drugs phase 1 से नहीं हो पाते हैं, that can also be getting detoxified, or that can also be getting converted through phase 2. So phase 2 is whole and soul for converting all the drugs to hydrophilic compounds and getting eliminated. So phase 1 reaction do not always produce hydrophilic or pharmacologically inactive metabolites. Okay, such metabolites can be converted to more polar and water-soluble products by this conjugation process. Okay, now this is achieved. How we can do that? As I said, by combining or by conjugating this small polar means hydrophilic. ये ध्यान में रखना, कोई भी watery group. तो जैसे ग्लूकोरोनिक एसिड, ये जो मैंने अभी नाम बोले, सो दैट विल गेट कॉन्जुगेटेड टू अवर ड्रग्स, एंड दिस विल बिकम मोर वाटर सोल्यूबल एंड इजीली एक्सक्रीटेबल, ओके, नॉन टॉक्सिक आल्सो. Even other reactions which we have mentioned, acetylation and methylation, they also inactivate the drugs, and so that prevent damage can be prevented, okay, further damage, the toxicity and everything. अभी यहाँ पे ये जो phase 1 reactions हम लोग बोल रहे हैं, फेज 1 रिएक्शन क्या करता है? लाइपोफिलिक टू हाइड्रोफिलिक मेटाबोलाइट्स. बट समटाइम्स जैसे मैंने बोला कि नहीं हो पाता, लाइक फेज 1 से वो काम नहीं हो पाता. सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ड्यू टू फेज 1 रिएक्शंस, बिकॉज इनिशियली क्या होता है कि पहले तो फेज 1 रिएक्शन ही होगा कोई भी ड्रग पे. तो जब कोई फेज 1 लाइक जो एंजाइम्स हैं, साइटोक्रोम P450 या कोई भी दूसरे जो भी ऑक्सीडेज रिडक्टेज एंजाइम्स हैं, that will work on that particular drug. पहले तो वो ट्राई करेंगे फेज 1 से उसको एलिमिनेट करने का, बट नहीं हो पा रहा है, बट उनका फेज 1 रिएक्शन हो चुका है. सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, देयर फंक्शनल ग्रुप इज एक्सपोज्ड, ओके, उसका फंक्शनल ग्रुप ओपन हो जाता है, बट इतना भी वो हाइड्रोफिलिक नहीं होता है, दे आर नॉट सफिशिएंटली हाइड्रोफिलिक सो दैट दे कैन बी एलिमिनेटेड, ओके, एंड दैट एक्सपोज्ड वाला मेटाबोलाइट कैन बी एक्टिव, राइट, बिकॉज इट इज नॉट कंप्लीटली एलिमिनेटेड. So in that case, this compound will enter into phase 2 reactions. Phase 2 reactions में either by conjugation or by acetylation methylation reactions, it will come into like inactive metabolite, either वो form करेंगे या फिर hydrophilic metabolite form करेंगे. So just mark the difference. Conjugation reaction what will do?
it will convert lipophilic compound to hydrophilic metabolites. And acetylation, methylation, what they will do? They will convert the active drug into inactive metabolite. Okay, both are phase 2 reactions, but they will do. यहाँ तक समझा है तुम लोग को? Yes, ma'am. Okay. Now, so we will take one by one this glucuronic acid conjugation or glucuronidation. This is the most common conjugative pathways in drug metabolism. क्यों? इसके नाम में देखो, glucuronic, so it is obviously it is coming from glucose. Okay, तो glucose water soluble होता है, right? Body में available होता है, so it is readily derived from glucose and it is available as a D-glucuronic acid. Okay, many functionality of the drugs, मतलब जो भी functional groups है drugs के, that can combine with glucuronic acid, and the formed conjugate has good water solubility. As I said, glucuronidation का main aim है hydrophilic compound बनाना, right? So it has got good water solubility. तो कौन से conjugation होते हैं glucuronidation से? Either that glucuronide or the glucuronic acid will get attached to oxygen. This is the structure of glucuronide. So even if you just write down G or OG, that will be fine. Okay, no need to draw the structure. If you can, very good. If you see 4 OH groups are there, that will increase water solubility. मैंने बोला जितना OH group ज़्यादा, उतना polarity ज़्यादा, उतना water solubility ज़्यादा. So either what they will do, oxygen glucuronides, nitrogen glucuronides, sulfur glucuronides और carbon glucuronides. तो जो अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो सकता है, नाइट्रोजन अवेलेबल है नाइट्रोजन के साथ हो सकता है, सल्फर के साथ हो सकता है, कार्बन के साथ हो सकता है. इसके लिए ऐसे बोला है कि मेनी फंक्शनैलिटी ऑफ द ड्रग्स कैन कंबाइन. तो फर्स्ट इज ऑक्सीजन ग्लूकोरोनाइड्स. ऑक्सीजन ग्लूकोरोनाइड मतलब मेनली जहाँ पे OH है, राइट? अभी ये देखो, ये वाले अभी मैडम यहाँ पे तो OH है, सो इट इज वाटर सोल्यूबल ना, व्हाई इट इज नॉट गोइंग? बट नो, बिकॉज फेज 1 रिएक्शंस में ये हाइड्रोफिलिक है, बट इतना भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे अमाइड लगा हुआ है, बेंजीन रिंग है, सो इट इज हेवी. यहाँ पे भी हेलोजन्स है 3-3, यहाँ पे भी ये हेवी ग्रुप है, so it is not that much hydrophilic also, so that it will get eliminated. यहाँ पे भी देखो heavy groups हैं. For that reason, even after having OH group, it has to enter into phase 2 reactions. Okay, and what they have to do, like if you see कौन से groups जाते हैं ऑक्सीजन ग्लूकोरोनाइड्स में? फिनॉल, अभी acetaminophen, C double bond OCH3 is aceta, this is amino, and this is phenol. So that's why its name is acetaminophen. Okay, so उसका OH जो है फिनॉल का, यहाँ पे ट्राइक्लोरोइथेनॉल, so अल्कोहल कैटेगरी में आ गया ट्राइक्लोरोइथेनॉल. देन कोमैरिन्स इनॉल्स में आ गए, देखो इनॉल है, डबल बॉन्ड एंड OH. Okay, so 4-hydroxycoumarin, it will come in under the category enols. Then N-hydroxyl amides, तो N को OH लगा हुआ है. Okay, तो यहाँ पे N-hydroxyl 2-acetyl amino फ्लोरीन, ये फ्लोरीन रिंग है. Okay, और यहाँ पे N को OH लगा हुआ है, so N-hydroxyl amides and N-hydroxyl amines. Okay, जहाँ पे यहाँ पे OH लगा है, NHOH, so N-hydroxydapsone. So these are some groups in which ये OH का जो H है वो निकल जाएगा, and this O will get attached to that glucuronic acid moiety and will be easily water soluble. So these, like at least 1 or 2 examples under all category you have to remember, like whatever, like because this is an important question, phase 2 reactions. Okay, or in, like write a note on drug metabolism. That question can also come, in which you have to mention phase 1, phase 2 both. Okay, or they can individually also ask phase 2 reactions, write a note on phase 2 reactions, so in which you have to mention all the steps and all the categories which come under that. So this is glucuronic acid. At least 1 or 2 example you need to remember. So acetaminophen and trichloroethanol is good, or as per your ease you can remember. Next is oxygen glucuronides में और एक है like aryl acids. This is benzoic acid. This is also a simple example. Here also this OH group will be replaced and glucuronic acid will get attached to this CO group. Okay, and become more water soluble. Naproxen में also
This is aryl alkyl, this aryl group, and here is alkyl group.